Artist of the Month, Anuv Jain. Alright, सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम जे मैन है मेरा नाम. मेरे साथ हैं हमारे आर्टिस्ट ऑफ द मंथ अनुव जैन. Alright, so अनुव, गूगल कहता है कि यू आर 95 born in लुधियाना और एक गर्लफ्रेंड से दिल टूटने की वजह से यू स्टार्टेड राइटिंग सॉन्ग्स. Is that really true? No. I was not born in Ludhiana, I was born in Mumbai, first of all, so like it's completely false. I was born in 1995 though, so yes, that's factually correct. So is it true कि you wrote Barishe long before it actually released? हाँ, that is true. I wrote Barishe when I was 17. तो मैं तो तब शायद क्या 10th स्टैंडर्ड में था या कुछ 10th 11th स्टैंडर्ड में था मैं उस टाइम पे. दैट्स व्हेन आई रोट इट. एंड मैंने तब अपना मेरे पास नोकिया का एक फ़ोन होता था, उस पर रिकॉर्ड करके मैंने यूट्यूब पे डाला था. कितने ड्राफ्ट्स बनाए थे आपने? यू नो इट्स सो अनफॉर्चुनेट, अब 12 साल हो गए हैं और मेरी मेमोरी बहुत ज़्यादा बेकार है, तो मेरे को इतना ज़्यादा याद नहीं है. बट एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा वो ऐसी थी कि ये गाना कभी एक गाना नहीं बनने वाला था. देयर वर मल्टीपल सॉन्ग्स दैट आई वाज वर्किंग ऑन एट द सेम पॉइंट. बट पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगा कि यार एक बार साथ में गा के देखते हैं लाइनों को, और मैंने गा के देखा तो वो बहुत अच्छी फिट कर रही थी साथ में. सो दैट इज़ हाउ इट वाज. एंड वो एक फिर ऑब्वियसली उसको थोड़ा फ्लो में लाए, उसके ऊपर मेलोडी पे थोड़ा काम किया, उसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन किया. बट दीज आर एक्चुअली मल्टीपल पार्ट्स फ्रॉम लाइक डिफरेंट सॉन्ग्स दैट केम टुगेदर टू मेक दैट सॉन्ग. बट वाज रिटन फॉर दैट वन पर्सन फॉर दैट वन मोमेंट दो. सो सबसे पहला ड्राफ्ट आपने किसको सुना है? आई थिंक अपने सिस्टर को एंड अपने मॉम को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एंड देन आई हैड दिस फ्रेंड ऑफ माइन जिसने मेरा पहला गाना यूट्यूब पे उसके चैनल पे है, उसका नाम आकृति है. तो मैंने गाना इससे बारिश से पहले भी एक गाना लिखा था और मेरे पास अब यूट्यूब था नहीं, तो मैंने उसके चैनल से डाल दिया था. वो आज भी उसी के चैनल पे है गाना और वो मुझे डिलीट नहीं करने देती. एंड शी इज स्टिल अ वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन. तो उसको मैंने सुनाया था. एंड देन ऑब्वियसली दीज पीपल रियली लाइक्ड इट एंड दे वर लाइक तू खुद का यूट्यूब बना के अब उस पर डाल. तो दैट्स व्हेन यू नो दैट्स हाउ इट हैपेंड एंड दैट वाज द फर्स्ट वीडियो दैट वेंट आउट. सो बारिश पे पब्लिक ने बहुत प्यार से कमेंट्स भी बरसाए. सो डू यू रिमेम्बर द फर्स्ट फैन जिन्होंने आपको रीच आउट किया था विद अप्रिसिएशन? तो मेरे को स्टार्टिंग से ही ऑब्वियसली अपने खुद के सर्कल में तो काफ़ी अप्रिसिएशन मिल रही थी उस गाने के लिए. बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ माई स्कूलिंग, लाइक जब मैं 12th में था, तब these bunch of like 13-14 girls who like apparently were like mega fans, they took my autographs. So that was the first time I actually gave an autograph. I have a picture of that on my Instagram also. If you like scroll all the way down to like 2012, that's where you'll find it. My first autograph, it's written. And don't try to like copy it. It's not my bank signature. Now moving on to another massive hit. It's called Husn, one of my favorites also. Exclusive content only on Super Hits 93.5 Red FM. The best bit is जो मैंने अभी तक किसी को बताई नहीं है इसके बारे में, तो इट्स ग्रेट कि मैं बात कर सकता हूँ इसके बारे में. सो जो ये गाना जब बना था, जिसकी फाइनल लाइन जिस दिन लिखी गई थी, दैट वाज 25th August. दैट इज माई मॉम्स बर्थडे. ओके. एंड ये गाना जिस दिन रिलीज हुआ, दैट वाज 1st December. दैट्स माई डैड्स बर्थडे. सो एंड इट वाज माई 11th song. My birthday is on the 11th of March. This song was destined to do what it did. I always knew this was a very special song, but I went to my team and I told them this is the best song that I've ever written. Let's put all our energy into it. I'm telling you, this is going to change our lives, and it did. It was number 1 in India, number 1 in Pakistan. It was globally number 60 or 70, which is a Hindi song. It was the most viral song in the world. It was the most viral song in India and in Pakistan as well. It did wonders. I'm so happy that, you know, universe chose me to like put this out in the world. Wow, man, that's really amazing. Okay. Is there a trend कि एक गाना हिट हो जाए तो उसके बाद उसका Part 2 बनाओ? Do you believe that the world will really get Husn 2? See, ऐसा कोई pressure नहीं है. But I feel with this song, I think it's written that there will be a part 2. Because there is an unsaid story in this. There is a different perspective of the song as well. So I think people expect it, and this is something that I also want to do. But when will I do it, and if I'll do it, I don't know. But it is definitely there in my head that I would love to make a second part of the song. जब आप गाने लिखते हो, जैसे जो तुम मेरे हो, you know, what do you really aim at? So when I write something like Jo Tum Mere Ho, which is not a sad song really, it has a very happy feeling to it as well. It has hope in it as well. How people want to perceive it, it's up to them. For me, it's a happy song. So what my hope is that when somebody listens to it, they would connect with that and they would relate to it, and they would also, you know, they would be able to apply some of the lines in their own lives as well. And the feedback that I've gotten is pretty much like we've pretty much nailed it, because there's this line in the song which says पूछे ये तू कि तुझ में मैं क्या देखता हूँ, जब चारों तरफ आज कितने ही सारे नज़ारे हैं, जाने ना तू खुद को यूँ ना जाने क्यों, नज़रों से मेरी यहाँ देखो ना खुद को ज़रा. So
I feel that, like every person out there has felt that way. That why me? Like there are so many people in the world, yaar, tum mere saath hi kyun ho? And that is when, we give them confidence as partners. Like we have to give them that confidence. Ki, yaar, there's so much to you that you don't even see yourself. So I think that relatability was definitely there, and people have loved that line. So I'm happy. All right, so come on, let's have this massive hit, and like an unplugged version right now. Let's do it. For us. Let's go. देखो ना जुल्फों से, कैसे जुल्फों से तेरी छुपती प्यारी प्यारी सी मुस्कान है, और नजरें झुकी और नजरें उठी तो मैं क्या ही करूं बर्बाद मैं तेरे होठों को जिनसे रखती मेरे प्यारे प्यारे नाम है, और दिल का तेरे अब मैं क्या ही कहूँ क्या बात है. एक गाना जो most challenging of them all and why? I think the most challenging song that I've ever made was Antariksh. Because Antariksh is a song जिसके अंदर ना मैं I know what you did, man. You know what I did, right? मैं थोड़ा सा rap कर रहा था उसके अंदर, right? And it's, even though it's like थोड़ा more there's a bit of both, because there's a flow in it. Yes, so it feels hip hop, it feels like rap, but at the same time it feels like poetry as well. So that was something that was very difficult for me and different for me, because the breathing I had to nail, the rhyme scheme I had to nail, because I learned a lot during that thing, the way the things were supposed to be broken. And the best part about that was that when because the song has to go really fast, so you have to write certain words in that way so that it feels fast and the song doesn't lose its pace. So that figuring that out was like a bit complicated, but it's one of my favorite songs that I've written, and I know that it'll find its audience one day. A splendid conversation with a splendid artist, real emotions, real vibes. बहुत ही incredible deep dive किया है हमने इनके world में, यानी कि अनूप जैन के world में. और भी बातें हैं, पूछना बाकी है. So ये सारी चीजें हम अगले हफ्ते करेंगे, because Anuv Jain, ladies and gentlemen, is our artist of the month on Red FM. बजाते रहो. Artist of the month, Anuv Jain. Only on Red FM. बजाते रहो.